And we are live. Brilliant. Yeah. So let me see if I get the notification. And yeah, it says meeting is now streaming live on Facebook. Great. So hello everyone. As promised, we have Ramma Cheema with us today. I've spoken about it I've spoken about it with a few people yesterday, and they were really excited to kind of hear her story out. So we'll be talking to her about her work and how she came about um, building Beti and what was the idea behind it. So let's start. So Rama, please आप अपने आप को introduce कराइए और बताइए you know where do you belong from, what is your education and everything. Assalamu alaikum. Thank you so much for giving me the opportunity to not just share Beti, but उससे मुंसलिक मेरी कहानी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मेरा ये आप करने का एक ही मकसद था कि मैं एक ऐसी एग्जांपल दे सकूं कि कोई भी अकेला नहीं होता, यूनिक ज़रूर होते हैं एक्सपीरियंसेस सबके, मगर कॉमन भी होते हैं, तो शायद किसी की हिम्मत बन जाए। मेरा नाम रमा चीमा है, मेरा ताल्लुक चीचावतनी से है और रिहाइश मेरी लाहौर की है। चीचावतनी अगर आप कराची की तरफ जाएं पंजाब से तो मुल्तान से पहले आता है और ये एक तहसील है। मैंने अपनी तालीम का थोड़ा I'd like to share. I've done my master's in journalism, mass communications. I'm also an IVLP alumni. इसके अलावा I think my greatest education is by far my experience. Right. So so tell us a bit about your early career in the sense that when you graduated, where did you go and why did you go there, and what was that early life was about. You know, since I told you I belong to a smaller city, my parents were very aware. So we are three sisters. We don't have a brother. And I belong to a family where we, हमारी जो फैमिली की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सो ये सब चीज़ों को देखते हुए मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा कि हम इसको छोटे शहर में पढ़ाएंगे तो शायद बाद में जिंदगी में इसको कुछ ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो दे सेंट मी ऑफ टू अ बोर्डिंग स्कूल इन मरी एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज ओनली 10 एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अब मैं सोचती हूँ कि मेरे नेकी की मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ, because I am what I am because of them, and I met incredible girls from Sindh, Balochistan, KP, Azad Kashmir, बहुत बहुत अच्छे लोग. At the same time, I was, these were my very delicate years, teenage, you go through certain body changes, you go through certain hormonal changes, and I was away from my mother. So वो कहते हैं ना जो हॉस्टल्स में रहे होते हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. And I was taught by the missionaries there, and then again I was sent to Connect College Lahore, because again it was a hostel that my father was very comfortable with. He thought it was like a nice college जहाँ जिसका hostel भी अच्छा है. And उधर मैंने अपना FA किया, BA किया, and then my masters. And मेरे ख्याल में सबसे जो खूबसूरत चीज हॉस्टल लाइफ की ये होती है कि आप में टॉलरेंस भी बढ़ती है, आप में अंडरस्टैंडिंग भी आती है कि द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू. देयर आर सो मेनी पीपल, सो डाइवर्स, language, the way they eat or what they eat, what they like, what they don't like, that I think it builds you for life, and that's what it did for me. So you think the experience you had at the hostel was a very kind of eye-opening and also kind of training you for the future life. So what did you do after that? Where did you start working after graduating from university? I remember that when I was at CANED, right after my bachelor's, there was a new program being introduced, journalism and mass communication. And let's remember that this was the time, right after, I think, a couple of years,
a lot of newspapers were allowed to open their media channels. So this was very new territory. And back then, मतलब शरीफ घरों की बच्चियां मीडिया में तो नहीं जाती ना, because उनका माहौल खराब है, और फिर जिस तरह के I'm a jat, so a lot of pressure के no, what will you now do, you will work in television, whether it's behind the camera or in front of the camera, और अखबारात में काम आप करोगे, ये भी काम होता है. And I think, I was discouraged a lot from doing it. And yet I think it was exactly that discouragement that kind of fueled me. And that said, nahi, ab to yahi karna hai. And I think it was a very, very natural choice for me. I love talking. I like new experiences. I love learning. और उसके दौरान मतलब practical learning भी हुई. And then a little after that I got married. And मेरे दिमाग में बिल्कुल काम करने का, या जो मैं आज यहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ अपनी जिंदगी के हवाले से, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था. मैंने इमेजिन किया था कि आई एम गोना गेट मैरिड, हैव लाइक 2-3 किड्स, लुक आफ्टर देम, डू समथिंग पार्ट टाइम, चिल. मगर जिंदगी में वही होता है जो शायद आपके लिए आपके नसीब में नहीं लिखा होता है. शादी से पहले ही मुझे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे गायनी के. I have endometriosis, acute endometriosis, and I couldn't have children. I was doctors ने मुझे ये कहा कि आप infertile हैं. My husband's absolutely fine, and that was the biggest blow of my life. Because when आप जब trauma का सोचते हो ना, फायजा बड़ी टाइम पे देखते हो ये तो उनके साथ हो रहा है ना, मेरे साथ तो कभी नहीं होगा. This is not going to happen to me. So I think for a couple of months I was in complete shock. I thought these reports belonged to someone else. ये क्या मजाक है मेरे साथ? And endometriosis, if some of you are aware, is very painful. Every month I was admitted to the hospital. Pain management I had to take, very, very strong painkillers. I was sometimes put on steroids. And my mental health suffered to the point where I even thought about killing myself a lot of times. And that अब प्लान कुछ और था, मगर काम तो करना है ना. सबने कहा कि why don't you get busy, why don't you work. And मुझे 10 साल की उम्र तक मैंने नोट किया बच्चियों के बड़े ख्वाब होते हैं, उन्होंने सब कुछ करना होता है. I'm going to be a painter, मैं टेक में जाऊंगी. अब बच्चे ये भी कहते होंगे टेक में जाऊंगी, and I am going to be an engineer. मगर जैसे जैसे वो टीनेज की तरफ जाते हैं, उनके ख्वाब, उनकी एनवायरनमेंट, उनकी फैमिली वो रिस्ट्रिक्ट करती जाती है. बेटे शादी कैसे होगी? आपको पता है जो ये जॉब करते हैं उनकी शादियां नहीं होती. आपको पता है आप बहुत ज्यादा पढ़ जाओगे तो भी रिश्ते नहीं मिलेंगे. फिर आप कैसे रहोगे अकेले? माँ बाप सारी उम्र सर पे नहीं रहते, भाई नहीं रखते. मेरा तो खैर भाई नहीं था, बट यू हैव दिस मिसोजिनी डायरेक्टेड टूवर्ड्स यू. 10 साल तक तो मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने का भी सोच लिया था, मगर उसके बाद आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ. Because everybody, even in the hostel, and I don't blame anyone there, because you had Pathan girls, Balochi girls, Sindhi girls, all of us girls were taught the same thing. We have to, मतलब reproducing हमारा मेन काम है. उसके बाद अगर कुछ मतलब बच जाता है वक्त, तो आप कुछ और ख्वाब देख. मगर और फिर तो पहले मैं मिसोजिनिस्ट नहीं थी. 10 साल की उम्र में ऐसी इंटरनलाइज मिसोजिनी मैंने फेस की. I was probably, अंदर से मेरे अंदर आवाज उठती थी, मैं खुद ही उसको दबा देती. और जब बहुत सी तालीम की चॉइसेस भी मैंने इस वजह से ली. मैं लॉ करना चाहती थी, कोएड में जाके एक्सपीरियंस करना चाहती थी, मगर मैंने इसीलिए नहीं ली कि उस वक्त मुनासिब नहीं समझा जाता था ऐसे हॉस्टल्स में दाखिला लेना, जब मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ. और इस मिसोजिनी ने मेरी चॉइसेस में बहुत किरदार अदा किया. बच्चे कहते हैं ना, बच्चे ना नफरत के साथ पैदा होते हैं ना मोहब्बत के साथ. वो तो बिल्कुल एक ब्लैंक कैनवस है, आप जो लिखेंगे वो पढ़ लेंगे. ये कब हम में फायदा चेंज आता है कि हमने ये सोचना है कि नहीं एक खास तर्ज का आप जिंदगी गुजारेंगे तो एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं. And oh God, so sometimes I feel like I wish वो कहते हैं ना टाइम मशीन हो, you could go back and
make different decisions, but I think zindagi mein wahi hota hai jo hona hota hai. And because I couldn't have a child, my whole plan collapsed right in front of me, and I ended up working. And now I tried to teach, but I'm horrible at teaching somehow, because I start having fun with the students. So that didn't work out. And then of course it was, I thought to myself, I said, I have a degree in communications, why don't I go do that? And then of course I started working for television and curated content. And even during my especially before my child was born, those 9 years, I was always leaving jobs here and there because I was getting a lot of treatment for infertility and endometriosis. So a lot of times I will, ये पहले होता था, मैं apply करती थी and people would look at my CV and आप इस दौरान कहाँ थी? And initially I would be ashamed to share कि जी वो मेरी treatment हो रही थी. What if there was a judgment? And then I thought to myself, what? This is not my fault. There should be no prejudice against illnesses that are a part of your body as you're born. Because with endometriosis, it is research also shows that it is a predisposition. So it's probably genetic that, some maybe my khala had it or my, and so there are gaps in my career where I was very, very ill. And my infertility led me to such difficult truths, I remember couples who would go for wanting a child and we were all sitting treatment के लिए, they would still ask for sons. Nobody ever said कि healthy बच्चा चाहिए. So ये मैं उन माओं को blame नहीं करती, मुझे नहीं पता वो ये क्यों अल्फाज अदा कर रही थी, शायद उनको अपनी घर से प्रेशर था, in-laws से प्रेशर था. Nobody wanted a daughter, I tell you. And when I looked at adoption, and I never adopted because maybe I wasn't ready or whatever, but everybody used to say that there's a girl that being, hospital ke bahar se mili hai, would you like to adopt it? Nobody ever said there was a, bachcha kisi ne diya. So maybe a bastard child is perhaps zyada wo kabool hota hai. उसके बाद ये हुआ कि मेरी मीडिया में भी चॉइसेस रही, तो पीटीवी में मैंने काम किया और A+ में काम किया, डिफरेंट कंसल्टेंसीज की, और मेरी नेचुरल ट्रांजिशन कुछ ऐसी रही कि ऐसे प्रोग्राम्स किए और ऐसा काम किया जिसका जनरली जो फोकस था वो खवातीन और बच्चों पे होता था. नेचुरल सी मेरी एक चॉइसेस रही, आई ऑलवेज गियर्ड टूवर्ड्स इट. एंड फिर गवर्नमेंट में जब काम किया तो भी विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट. और लास्ट ईयर जब मैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम कर रही थी तो एक मीटिंग थी और उसमें ये बात हो रही थी कि कौन से मनसूबाबंदी के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करने चाहिए. और मैंने सोचा कि अच्छा ये ज्यादातर तरीके तो खवातीन के लिए तरीके हैं, तो खवातीन कितनी है इस टेबल पे, कहाँ है खवातीन, इंक्लूसिविटी कहाँ है, क्यों नहीं हमारी बच्चियां बैठी हुई कि मतलब अगर आपकी चलें चाइल्ड मैरिज, अब ठीक है लॉ पास हो गया, बट अगर 18 में भी शादी हो रही, वो बैठी क्यों नहीं इधर ये फैसला करने के लिए. एक 30-year-old 35-year-old क्यों नहीं बैठी हुई. और तब बस मुझे पता था मैंने बेटी क्रिएट करना है, एक मीडिया एंड एडवोकेसी प्रोग्राम जिसमें मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी है कि मोर एंड मोर women आर इकोनॉमिकली empowered. जैसे आप काम कर रही हैं, आप मेरे लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है. और आप सोच नहीं सकते कि आपने मुझसे ये शेयर किया कि बहुत सी ऐसी खवातीन भी आप ट्रेन करती हैं जो शादी के बाद, बच्चों के बाद आपसे ट्रेनिंग लेती हैं. दैट वाज सच गुड न्यूज. आई केप्ट स्माइलिंग फॉर 2 days. बिल्कुल ऐसा ही है. एंड वी ऑल्सो काइंड ऑफ सी कि द वुमेन हु आर मैरिड एंड हैव किड्स, their motivation is because they want to provide for their kids. Their motivation is that they want more money in the family because they want to give better education to their kids. So we see them working मतलब learning बहुत ज़्यादा passion के साथ वो learn कर रही होती हैं and they are very open to opportunities. उसके मुकाबले में वो लड़कियां जो कि अभी शादी नहीं हुई है या यंग है, उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके फादर्स, उनके भाई, ये प्रॉस्पेक्ट के शादी कब होगी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है. इन लॉज काम करने देंगे या नहीं करने देंगे, हस्बैंड काम करने देगा या नहीं करने देगा. लेकिन जब वो एक मैरिड खातून होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो इट्स इन अ लॉट ऑफ केसेस इट्स जस्ट हर एंड हर हस्बैंड
and that decision revolves around how you can kind of take this family to the next step, and that next step comes with better finances, so they are easier to kind of take that decision that I want to work. कुछ limitations है in the sense that a lot of them would want to have home based jobs, लेकिन अब क्योंकि टेक सेक्टर वैसे ही थोड़ा इस मामले में ओपन है और अब कोविड की वजह से वैसे ही लोग घरों से काम कर रहे हैं, तो वो एक काइंड ऑफ, इवन दो इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन, बट इन सम केसेस दिस केम लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, इन द सेंस कि हमें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं इन लड़कियों के लिए, और हम वी आर कॉन्स्टेंटली प्लेसिंग दैम. अभी हमने लास्ट वीक 3 और प्लेसमेंट्स कराई हैं, तो वो मतलब मैरिड, तीनों लड़कियां मैरिड हैं, एक के बच्चे हैं, तो मतलब it's a very heartwarming thing to see, and also kind of see that people are, the men in the family are also realizing that these women have more earning potential than them, and they are okay with this idea. Wow, amazing. Because in a lot of cases you will see कि जब उनको लगेगा कि ये औरत ज्यादा पैसे कमाएगी, तो वो कहते हैं नहीं, ये तो सर पे चढ़ जाएगी और ये तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हम इन केसेस में देख रहे हैं कि they are very comfortable with this idea that the woman is kind of making more money than the man in the family. So वो that's really empowering to see. Tell us a bit more about I Beti. wanted to say something. That is it because maybe they don't want to share with the rest of the family, but they keep it to themselves. The couple keeps it to themselves, and it's an understanding. Because I don't think मतलब मर्दों को ज्यादा मसला होता, बट उनकी शेमिंग होती है शायद, इसलिए भी वो थोड़ा अवॉइड करते हैं. और ऐसे इनिशिएटिव्स मेरे तो दिल के इसलिए भी बहुत करीब हैं, क्योंकि जब मैं हमेशा समझाती हूँ कि एक औरत जब अपने राइट्स को नहीं जानेगी, बच्ची को अपने राइट्स का नहीं पता और उसके हाथ में कोई हुनर नहीं होगा, तो वो ओपन टू अब्यूज है इन एवरी सिचुएशन. क्योंकि आपको कैसे पता है कि जो आपने जिंदगी अपने लिए प्लान की है वो वैसे ही होगी. सो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ स्किल वेयर यू कैन सेफगार्ड योर लाइफ एंड लेटर इवन योर चिल्ड्रंस. Definitely, और because वो usually work from home की opportunities होती है ना, तो they also do not have to tell people because they are not going out. They are working from their bedrooms. Excellent. So we hear from a lot of girls that they tell us that मतलब मैंने नहीं मेरे इन-लॉज को नहीं पता, या मैंने अपने अम्मा अब्बा को भी नहीं बताया, because they would say कि बच्चों का क्या होगा और बच्चे कौन देखेगा and stuff like that, but they manage. And I have seen a lot of working women having wonderful kids and managing their households really well, and men should also participate equally in that, running the household. So it's extremely important that we kind of, maybe if we'll start pushing more women towards work, it will kind of make men realize that they have to kind of up their game as well. I think the responsibility is also on how they are raised. So for me, it's very important to show my son that your mother has the choice and she can exercise it when she wants, so that when inshallah when he gets married, he behaves in a certain responsible manner, and that's what I would want, a acha human being. Definitely, and that's the thing, that kids not only listen to us, but they also see us. They see us in situations when we are vulnerable, when we are at our worst and at our best. So a lot of it is learning from them, learning for them. So हमने भी सीखा है अपने आसपास से लोगों को देखकर. कुछ लोगों को ये देख के सीखा है कि हमें इनके जैसा होना है, और कुछ लोगों को देख के सीखा है हमें इनके जैसा नहीं होना. तो बच्चे भी वही चीजें देख रहे होते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. Tell us a bit about Beti and what exactly does it do, and how do you see that organization in future? फाइजा, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो एडवोकेसी है उसको करने के बहुत से तरीके हैं, और ऑन ग्राउंड एडवोकेसी भी मैं करती हूँ, मैं सेशंस भी करती हूँ, वर्कशॉप्स भी करती हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाती हूँ, प्राइवेट और पब्लिक इदारों में जाती हूँ, और कन्वर्सेशन में जरूर स्टार्ट करती हूँ अबाउट जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, इंक्लूसिविटी, challenges that we face. However, I still think that media is a very, very strong tool to change certain behaviors. And the entire point of doing Beti is to achieve behavioral change. And by behavioral change, I just don't mean in men, also in women.
a lot of times there are challenges that women are facing that are posed by other women. And I'm very mindful of that. So behavioral change, and I wanted to make a lot of people aware that yes, there are successes, but there are still very glaring challenges, in terms of gender parity, or in terms of, I think I read somewhere that only 2% of women ever reach the CEO level or the leadership level in companies. And that for me is a very sad number. So ठीक है, हम चीजें अच्छी हो रही हैं, मगर देखें उतना भी चेंज नहीं आया जितना ये पिछले 50 सालों में आ जाना चाहिए था. अगर आप कहते हैं हम 51% और अभी भी हम वहीं खड़े हैं, अभी भी बच्चियों की गोस्ट स्कूल्स हैं, बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, बच्चियां काम नहीं कर रही हैं, अगर वो चाहती हैं काम करना तो फिर खड़े तो हम वहीं हैं. और दूसरी बात ये, क्योंकि मीडिया की मेरी एक ट्रेनिंग भी थी, तो मैंने एडवोकेसी करनी थी, इसलिए मैंने मीडिया को इस्तेमाल किया. अब मीडिया में टेलीविजन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया are obviously very very expensive, so social media for me was a blessing. So using our YouTube channel, Facebook, Insta, Twitter, we give out certain messages, and there's like content that we produce, and then we share news and reports that we think are relevant to women and the girl child. We also do partnerships where हमारी कोशिश ये होती है कि अवेयरनेस लोगों तक बढ़े कि चॉइसेस हैं उनके पास, और अगर उनको मसाइल हैं तो वो क्या कर सकते हैं. जब कोविड शुरू हुआ है तो a lot of I mean मेरा बेटी 1 साल से हम लोग in place हैं. We've never put in any money on boosting the content, or but I still feel कि मुझे अपनी थोड़ी सी भी काविश की बहुत ज्यादा success लगती है. A lot of women reached out to me and said, I'm facing this. My husband, he's at home, he's irritated, he started hitting me. So what I did was, हमने बहुत से public numbers ले लिए, helplines के, उनके करीब जो खवातीन के safety centers हैं, and we kept giving those out regularly on private messages. Then a lot of young girls reach out to me and they say, okay, I'm going through this, how do I handle this? So we kept guiding people, and of course आपका exposure जब होता है और आपको public sector में certain opportunities or certain problem solving techniques का पता होता है, तो you are able to give it to them also. And idea यही है कि behavioral change हो बेटी के through, and I would really appreciate अगर आपके audience भी जाके हमें like करें, share करें, follow करें, हमें खुद भी बताएं कि उनकी फीडबैक क्या है, उनको क्या लगता है कि किस बात पे ज्यादा बात होनी चाहिए. वैसे तो अनफॉर्चुनेटली अखबार में रोज कुछ ऐसा आया होता है कि कंटेंट की कमी महसूस उस तरह नहीं होती, और नेगेटिव जब आता है ज़ाहिर है दिल दहल जाता है. बट वी नीड टू पुट दिस फॉर डिबेट, और वी नीड टू पुट दिस अक्रॉस टू पीपल, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और आई थिंक इसके अंदर एक दूसरा मसला, if we talk about the change, the process of change is also slow because women are kind of conditioned to be scared of new ideas. So you see that repeatedly, that even a lot of them will have a choice, they won't exercise it. Even if I talk about myself, so I'm from a family that kind of did not stopped me from getting into a public engineering university, a family where I'm a girl and I travel wherever I want to travel. I got married, even though the other family that I have is like very conservative, and girls get married like in 16, 17, 18 years of age. I got married at 32. So, and I got married to a guy who was outside of the community. It was a very unconventional type of, situation. And so I belong to that kind of privileged background where I have a voice, where I can say that I want it and I can get it. But at the same time, we see that even women like us have that kind of fear of exposing ourselves, our kind of very progressive ideas, because we are scared of the backlash. So I keep on thinking about my situation in comparison to a lot of other women who do not have that privilege. So for them, it gets extremely difficult.
in the sense how to navigate it. So the advice, for example, that you just said that आप advice दे रही होती हैं, आप लोगों को help कर रही होती हैं, that becomes really crucial because these are the things that they cannot go to their families to talk about that. No. And you know, Faiza, a lot of, you know, women and young girls started to talk to us about you know, sexual abuse that they had gone through as children and then later teenagers. And then, you know, a lot of young men also did, which was very surprising for me because, but you know, maybe they needed a platform and I was happy to kind of be there for them. I honestly feel कि मुझे याद आता है कि अच्छा 18 साल की रम्मा कैसी थी, बहुत अंदर मतलब डर था, खौफ था, कुछ पता नहीं था उस एंड पे क्या है. I have to put myself back there to understand why some people might have it. मतलब उनके लिए मुश्किल होगा. दूसरा, आज भी आपने सही कहा, कहने को मेरा बड़ा दिल करता है बातें, बट मुझे फिर ये होता है बैकलैश ना सिर्फ मेरे पे होगा, मेरी फैमिली पे भी उसका होगा. So I have to be mindful. And you know, you don't want to hurt your family at any cost. I mean, they, आपकी औलाद, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, ये सब सबसे ऊपर होते हैं. वो हमेशा से आपके सपोर्ट सिस्टम है और अब मेरा ख्याल है उनकी सेफ्टी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. But at the same time, you know, I don't know if you face this, but I was always, you know, these gender roles that we confine ourselves to. Men don't go into the kitchen, men don't iron their own clothes, women don't speak when there's a gathering, wait for your turn, men perhaps we have more wisdom and things like that. And I grew up with that. And I started condition myself to think वाकई मेरा brain शायद ना थोड़ा छोटा होगा, आदमियों को तो बेहतर पता है ना. बाद में बड़े होके पता लगा, it's, you know, I mean, both the same. मैं कुछ और कहने लगी थी पर मैंने कहा ये ना ये भी backlash हो. But मुझे भी बहुत देर लगी अपनी जात में comfortable होने में. अभी भी बहुत से लोग बड़े आराम से कह देते हैं you behave like a man. You know, you are a man. और मैं कहती हूँ कि ये क्या है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस तो मेरी मर्द जैसी नहीं, तो आप ये क्यों कहते हैं? नहीं, तुम न डरो, तुम फैसले मजबूती से ले लेती हो. मैंने कहा मगर ये इसका जेंडर से क्या ताल्लुक है? ये तो इंसानी एक वो है ना, और तुम जो है रिस्क ले लेती हो. मैंने कहा अगेन इसका जेंडर से क्या ताल्लुक है? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि तुम एक मजबूत औरत हो, तुम एक निडर औरत हो? आपने ये क्यों सोचा है कि ये जो कुछ क्वालिटीज हैं ये सिर्फ मर्दों में ज्यादा पाई जाती हैं? सो वो तो आई थिंक वी स्टिल फेस इट. एंड अब वो कहते हैं ना, आदत हो जाती है आपको, आप थिक स्किन्ड भी हो जाते हो, आप डील करने के तरीके आपको आ जाते हैं. बट मैं तो ये भी कहूंगी कि फायजा अब भी बिना मतलब महफिलों में, पब्लिक स्पेसेस में इतना ज्यादा काम होने की जरूरत है कि कभी कभी तो दिल खुश भी होता है जब आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरी इस बात का शायद कहीं ना कहीं कोई असर हुआ होगा. मगर कई दफा हिम्मत आपकी बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे चली जाती है when you're talking to certain people कि there's so much work that needs to be done. and I'm happy कि बेटी के साथ साथ बहुत organizations हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं, wanting to change the mindset. And also, I think the greatest problem that I face in terms of advocacy is, or changing behaviors towards women and girls, is that people don't want to unlearn. एक कोई मतलब बात किसी ने कह दी, उन्होंने सुन ली, वो रिपीट होती गई, they never questioned it. Why do you not unlearn bad behavior or bad decision? Conventional wisdom मुझे भी बहुत पसंद है. कई बातें 100 आने बिल्कुल सही होती है, मगर कहीं बिल्कुल मतलब उनको डिलीट कर देना चाहिए. और आप क्या कहते हैं, आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, सोचने की आप में सलाहियत है, क्यों नहीं आप अपना ज़हन इस्तेमाल करते कि डज दिस मेक सेंस? आपको तालीम भी अगर दे चुके हैं आप, अच्छी मतलब चल, मैं तो क्योंकि प्रिविलेज लोगों की भी बात करूंगी, उनकी तरफ से बैकलैश आता है. Why are you doing this? You're polluting young minds. You're giving them all ideas of freedom. Of course, the entire point of this misogyny is control. You keep telling us we are weak. You keep telling us we can't do it, mainly because you want to control us. बिल्कुल ऐसे ही है. And controlling and policing women's behavior and bodies
is the best way of kind of making sure that they can create victims out of us. So वो Yeah. एक consistent cycle है. अच्छा कुछ questions आए मेरे पास. जी जी. You एक तो someone has asked कि जो हमारी families के अंदर internalized misogyny है उसके साथ हम कैसे deal करें. मेरा ख्याल में कि आप अपने अंदर यकीन मजबूत करें. देखिए कहते हैं ना कि दूसरों को बदलते बदलते जिंदगी गुजर जाती है, वो शायद ना बदलें. सेल्फ बिलीफ इज एवरीथिंग. अपने आप को इतना मजबूत करें कि आपको अगर सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए तो उनसे शायद ना मिले आपको. अक्सर आप कहते हो कि वी कांट चेंज हाउ आवर पेरेंट्स थिंक, एंड वी रियली कांट. The only way you can change their opinion is if you give them the most extraordinary example of your success, of your hard work, of your honesty, integrity, and of your resilience towards your, whatever your goals are. खुद ही को कर बुलंद, इतना कहते हैं ना कि आप अपने में इतना, क्योंकि बहुत दफा मैंने ये देखा है कि people complain, even young men will complain, ये नहीं होगा, पेरेंट्स नहीं मानेंगे. भाई आप उनको करके दिखाएं ना, मेहनत करें, इतना अपना मुकाम मजबूत करें कि वो फिर आप कुछ समझना शुरू हो जाए आपको, और आपका ओपिनियन भी लें, आपको जो हैसियत आप चाहते हैं घर में वो भी दें. मगर मेरे ख्याल में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो कभी भी नहीं करना चाहिए, और अपने आप को बदलने पे शायद ज्यादा फोकस होना चाहिए बजाय कि आप उनको बदलें. वो तो दैट्स अ चैलेंज. समटाइम्स चेंज हो भी जाते हैं, और अगर चेंज होते हैं वो आपकी मजबूती को देख के होते हैं, परसेवरेंस को देख के होते हैं. Definitely, and I think my experience with the kind of background that I'm from is the same. That people don't believe you, but when once they see that you can do it and you start doing it, so suddenly you will see a lot of people New friends. saying that that हमें तो पता ही था ये तो हो जाएगा, ये तो ऐसी है और ये वो, तो मतलब that's very very common. So my husband says that to me a lot, that success has a lot of fathers, failure is orphan. So when you become successful, so you get a lot of fathers, in the sense that people kind of own you and own your success. So that is true. And I think another point is that being women, you always have to prove yourself, your worth, more than a guy. It's it's always there. And you also kind of have to put in more effort into everything. So even though if you're working, even though you have a full-time career or whatever that may be, people still expect you to work like a homemaker. You will also see that if a guy is making money is his only job, but if a man, if it's a woman who's making money is just a thing, and there are other things. Yeah, so you come home, you do everything, you make decisions, khana, ye wo, safai, that's all on you, by the way. Yeah, so I think that also needs to change, in the sense that families need to realize that because of the current economic condition, and वैसे भी पाकिस्तान के जो हालात हैं इकोनॉमी के हिसाब से, you cannot just put it on one person to make all the money and then other people to just stay at home. It does not even economically make sense. I absolutely agree, because you see ye heart condition, anxiety, early 40s men are getting those only because they're so worried कि bills देने हैं, बच्चों की fee है school की. And this is what I say, that share the burden. Let us share the burden with you. Make life easier on you. Yeah, and it goes both ways, in the sense that it's not about, we are talking about, because again, think about it. My mother is a homemaker. She's sitting right in front of me, by the way, right now. Okay. So she's a homemaker. So she's a homemaker, and I see that the amount of work she does in the household is more than I do. But the kind of day that I have, in terms of the amount of work that I do, ghar ka, bahar ka, and all those things, is more than her. So if men think that working outside is liberating, it's even more stressful for women as well. If the men in the family do not support them, it becomes really difficult. So it goes both ways. एक और सवाल हमारे पास आया है आपके लिए अबाउट वर्क प्लेस इश्यूज. सो आपने बताया कि आपने गवर्नमेंट में काम किया है और जगह पे काम किया है. सो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
ये एक माइंडसेट है कि अगर एक खातून आई है तो वो शी इज जस्ट अ शो पीस एंड शी इज देयर बिकॉज शी इज देयर एंड देयर इज नो एक्चुअल पर्पस ऑफ हर. सो व्हाट टू डू, बिकॉज टेक में ऐसा नहीं होता. यूजुअली टेक में बहुत ज्यादा खवातीन है और जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं. तो मिसोजिनी है लेकिन फिर भी थोड़ी अंडर कवर है, लेकिन जो है वो थोड़ी सी अंडर कवर है. लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में ये बहुत ज्यादा है कि जो मीनियल काम है, जो सेक्रेटरी लेवल का काम है, जो नॉन टेक्निकल और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशनल और काइंड ऑफ हाउस कीपिंग का काम है, वो खवातीन को दे देते हैं. तो वो कभी सिचुएशन आपने फेस की, उसको कभी डील किया आपने? फायजा मैं अभी तक कर रही हूँ, आप कह रही हैं कि डील की कि ओ बल्ला. मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे एक रिलेटिव भी है. मैं ऑफिस से थकी हुई आई और उन्होंने कहा कि इट मस्ट बी सो इजी फॉर यू तुम बाल ऐसे करती होगी और मतलब तुम्हारी तनख्वाह आ जाती होगी. I'm like, ये कौन सी यूनिवर्स में आप, मतलब सीरियसली. फिर अक्सर ये होता है बोर्ड रूम्स पे, यू नो, यू लाइक आई हैव समथिंग टू से and I corrected myself. I used to say, sorry, I have a point. I said, why am I apologizing? I said, I have a point. It's better than his, you know. And मजबूत हूं और बहादुर हूं और कोई इसका तरीका नहीं. ये आपको सुनना पड़ेगा. ये हमसे पहली जनरेशन जिनने काम करने का सोचा उन्होंने भी सुना. हाई पोजीशंस पे अक्सर ये भी मैंने सुना है, अच्छा आप कर लेंगी, मतलब ये वो आपके बच्चे सच्चे होंगे ना, प्रेगनेंसी ना हो जाए फिर आप क्या करें. भाई प्रेगनेंसी में मर्द औरत दोनों शामिल हैं. मर्द को भी चाहे, मतलब वी आर हैविंग चिल्ड्रन फॉर आवर मेल हस्बैंड्स, राइट. तो ये तो बायोलॉजिकल है. एंड यस वी आर गोइंग टू टेक 3 months ऑफ और व्हाटएवर द कंपनी पॉलिसी इज. या आप हम पे वो नहीं कर रहे एहसान. ये मतलब दुनिया ही नहीं चलेगी इफ वी स्टॉप हैविंग चिल्ड्रन. देन यू नो आप तो लेट नहीं बैठ सकोगे. मेरा बहुत ये एक सेंसिटिव सा पॉइंट है. 9 बजे दिन शुरू होता है. बहुत से मैंने देखा है मेल बॉसेस काम ही शुरू करते हैं 3 बजे के बाद. सुबह चाय उधर इधर. आप 9 बजे से प्रोडक्टिव डे शुरू क्यों नहीं कर सकते? अगर आप 3 बजे काम शुरू कर रहे हैं और उसको रैप अप, जाहिर है वो रात के 9 बजे होगा. काम ही 3 बजे शुरू होता है. एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस आई सी. बॉस अभी गोल्फ के लिए चले गए. क्यों गए हैं बॉस गोल्फ के लिए? उन्हें काम करें ना. आप मुझे खुद ऑनेस्टली बताएं, क्या हर दिन में 3 या 4 से ज्यादा घंटे प्रोडक्टिव नहीं होते? डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही तो है. ये मतलब ये क्या काम है जो लेट भी बैठना पड़ रहा है और मतलब 12-12 जब बजे तक होता नहीं है. यू नो स्मार्ट वर्किंग पूरी दुनिया कर रही है, मगर नहीं. इधर तो ऑब्वियसली आदमियों के लिए आसान है, वो लेट बैठ सकते हैं. उनका ऑनर अटैच नहीं है पूरी दुनिया का, मतलब उनसे वो नहीं है. वो अगर इन लॉज में नहीं है तो वो तो बस आएंगे, हाय मेरा बेटा कितना थक गया होगा. मतलब every trust me, we all need a cup of tea and a, you know, rest, but there's no understanding for it. And my only unfortunately जवाब है कि मैं तो अभी भी इसमें से गुजरती हूँ और मैंने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है. ये जरूर है. मैं बड़ी दफा ऐसा होता था मेरा, मैं जब अमेरिका गई ना तो IVLP का एक्सपीरियंस था और मेरा ख्याल है ये he was from there was this journalist from Sri Lanka and वो यही region है ना. So I tried to say something. It's like what she's trying to say. I said no, you don't talk for me. आप नहीं मेरे लिए बोलेंगे, आप मेरा माउथ पीस नहीं है. ये अल्लाह ने मुझे दिया है. A lot of times ये भी होता है, मर्द क्रेडिट ले जाते हैं आपकी बात का. वही आइडिया आपका होगा कि लेट्स सी बजट्स नहीं है, कोई और देगा मेल, वो कहेंगे वेरी गुड आइडिया. तो जंग जारी रखें खवातीन, ये मुश्किल आसान नहीं है रास्ता. बिल्कुल ऐसे ही है. सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी इसी तरह का इन्वायरमेंट है. सो यू विल सी दैट मेरी जो टाइमिंग्स हैं वो 10 to 7 ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं, बट यूजुअली पीपल कम रियली लेट. लाइक मर्द हजरात, खवातीन तो आ जाती हैं सुबह में, मर्द हजरात 1-2 बजे उठ के आ रहे होते हैं. और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 7 बजते हैं तो उनका काम शुरू होता है. तो वो मेरा जो है वो तरीका ये होता है कि मैं उनसे बोल देती हूँ कि भाई देखिए आप घर जाएंगे तो आपकी बेगम आपको खाना देंगी ना, मैं किसी की बेगम हूँ. सो आई हैव टू गो. I have to go and I have to cook. So it's 7 p.m. I'm leaving. I cannot stay back. Yeah.
So that is something, and then this is not my weakness. You cannot kind of make it sound like कि भाई इनको तो अपने घर की पड़ी होती है, because you don't understand that. You are not part of that struggle. You don't know that how long my day is. You have no idea. So and this Actually is they've something. seen it. They might even know उनकी अपनी बेगम या घर में कोई और उनको सब नजर आ रहा होता है, but they've gotten away with it. Yeah. And another thing is that I kind of also make sure that I tell them that because a woman knows that she'll come at 10 and leave at 7, she knows that whatever she has to do, she has to do in those hours. So she won't go for a cigarette break after every 30 minutes. She won't go for a chit chat break after an hour, because she knows कि मेरे पास तो टाइम ही इतना है. तो अब इनको पता है ये लेट सिटिंग कर सकते हैं, ये ओवर टाइम ले सकते हैं, so they'll stay late. For them it's not a problem, right? So वो organizations को भी I guess aware करने की जरूरत है, in the sense that you need to hire people who know how to get the best possible job done in the smallest possible amount of time, rather than smart just work. keep on stretching stretching things forever. राइट. एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए और एक कमेंट है. कमेंट मैं पहले पढ़ देती हूँ. ये हमारी कोड गर्ल्स की स्टूडेंट है समीरा. उनका कमेंट आया है कि इट्स ग्रेट टू ब्रिंग सच जेम्स ऑन बोर्ड एंड मेक अस रियलाइज लाइफ इज इक्वल और मोर चैलेंजिंग फॉर पीपल अराउंड. थैंक यू फॉर ऑनबोर्डिंग सच फाइटर्स. So that's for you. And I think the last question that we have is about you spoke about the stigma attached to infertility in women. So how do you think other women can help, like women can help each other in that regard? फैजा, वो एम्पैथी, क्या जिस्मानी जो अमराज होते हैं उस पे मेरा या आपका कंट्रोल है? क्या हम चूज करते हैं कि हम बांझपन से गुजरें या हम तकलीफ दे वो करें? ये क्यों है कि हम अपनी बेटियों के लिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बहुओं के लिए नहीं? ये क्यों है कि देखिए, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी एक और मतलब डिस्कशन है. मर्द में भी मसला हो सकता है, औरत में भी हो सकता है, और अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करें. एंड अगर आपकी फैमिली में है तो प्लीज उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले. ट्राई टू बी मोर माइंडफुल. डू नॉट पास इनसेंसिटिव रिमार्क्स. डू नॉट से यार डिप्रेस ना होना, मतलब हिम्मत नहीं हारते, गुनाह है. उसकी दुनिया खत्म हुई होती है. उसको डॉक्टर्स ने अगर कह दिया आपका हो ही नहीं सकता, देयर इज वन ब्यूटीफुल फैसेट ऑफ लाइफ दैट शी इज नेवर गोइंग टू एक्सपीरियंस. लेट हर बी सैड. लेट हर गो थ्रू हर प्रोसेस ऑफ ट्रॉमा. ये जो आपने लर्न, मतलब मैं कहती हूँ फ्रेजेस सुनी हुई है ना, ये प्लीज बंद कर दें. इनसेंसिटिव रिमार्क्स ना दें. जानिए उनकी तकलीफ के बारे में. अगर आप गुजर रहे हैं तो शहर बदल लें, बिकॉज आप तो भूलना चाहेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं भूलने देंगे कि आप में कमी है. यू नो, तीसरा ये कि मैं कहती हूँ कि इंटरनेट और अवेयरनेस और मीडिया की वजह से इतना अब डेटा अवेलेबल है, और मैं आई एम सो ग्रेटफुल फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ डिजीजेस कि अब तकरीबन हर चीज का इलाज इस मामले में मुमकिन है. सो फाइंड आउट. डोंट रीड अप. That's how I learned, and I made my own decisions about this because I had an informed decision. And बेबस या होने की कोई जरूरत नहीं है. मजबूत करें अपने आप को. और कहते हैं ना कि कोई जरूरत नहीं बार बार उन लोगों के करीब जाने की जो आपको और आपके स्पिरिट को डिमिनिश करें या आपको याद दिलाएं कि आप में कमी है. आप अपना ऐसा स्पेस क्रिएट करें जो आपको बिल्कुल सिर्फ आपकी वजह से एक्सेप्ट करते हो. बट मोस्टली आई थिंक सपोर्ट सिस्टम आप उनको दें. और प्लीज ये घिसी पिटी, मतलब वो जो एक लाइनें हैं वो ना उनको बोलें, वो उन्होंने बड़ी दफा सुनी होती हैं. डोंट कॉल देम ब्रेव, टेल देम टू बी ब्रेव. You don't know what they're going through. Tell them कि I don't even know what you're going through, but I'm just here. मुझे नहीं पता तुम किस दर्द से गुजर रहे हो या गुजर रही हो. Right. बिल्कुल बिल्कुल, definitely, because the person who's going through that is the only person that actually knows it, and other people around you are just bystanders, and they can
and they should be there when you need them, but at the same time they should also know that you cannot, repressing emotions is not the way to go in any kind of situation. Definitely. So that's all. Thank you so much. Thank you so much बहुत for शुक्रिया taking the time out. Thank you so much कि आपने बड़ी honestly, candidly बातें की, because it's extremely important that we tell, even though people look at you and they see a role model, they should also know that you are a human being and have your own set of struggles. So it's extremely important. Thank you so much. थैंक यू सो मच फाइजा मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी डूइंग दिस Great. So so yeah, we have been watched in a lot of communities. I can see over 100 plus people watching us. So thank you so much, everyone, and have a great night ahead. Take care.